Hello everyone, myself Rishi Agrawal. I am assistant professor in GL University. I am working in this university from last 13 years. So let us discuss a very important topic, that is software life cycle models, or we can say software development models, or it is also known as process models. So as we know, the goal of software engineering is to produce quality software. The software must be maintainable, delivered on time, within budget, and satisfy its requirement, right? So how we can develop a quality software? How we can make them maintainable? How the software will be delivered on time? It must be within budget, and most important thing, it must satisfy all these requirements of the user. So for all fulfilling all these needs, we are having different types of models, process models or development models for the development of a software, right? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने कुछ मॉडल्स दिए हैं जिनको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर को अपने डेवलप कर सकते हैं. So the goal of software engineering is to provide models and processes that lead to the production of well documented maintainable software. So we will understand one by one what are the different models and how we can make the different types of softwares with the help of different models. So there are different types of models, as you can see, like build and fix model, waterfall model, prototyping model, iterative enhancement model, spiral model, and agile model. All the models are used for development of software, but thing is that all the models are used in different types of scenarios, in different types of requirements. Like for first waterfall model, we are having different types of scenario. Prototyping, we are having different types of scenario or requirements. So on the basis of different types of users, different types of scenarios, different types of requirements, we are having multiple models. So whatever we are having the user need, accordingly we will pick up the model and we will start the development. So today we will discuss first two models, build and fix model and waterfall model. So this is the first model, that is build and fix model. And as we can see from this diagram, it is a just two phase model, that is build code and fix, right? Build code means you just code, you just develop a particular project, and after coding you just fix means you just find out that whether any error, any type of problem is there, you just try to fix that particular code. So ad hoc approach is used, right? What do you mean by ad hoc approach? Basically, we are not having any well-defined steps, like first we will have this step, second, and so on. We are just using an ad hoc approach, means we will just start the development, right? Means there is no proper format of gathering the requirement, designing, planning. We are just taking some raw requirements and just start the development, and after that we will fix, or we can say we will test the particular software, and we will release the particular software. So this model is having different types of disadvantages. Basically this is suitable for small exercises. If you want to develop a very small project, then this model is good. But if we want to develop a huge software, and we want to develop a software that is maintainable, so that type of software development is very difficult on the by this particular model. Why it is difficult? It is difficult because in build and fix model we are not doing any type of documentation, and without documentation it is very difficult to perform any type of maintenance, right? क्योंकि जब भी आप मेंटेनेंस करोगे तो मेंटेनेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास पहले से कुछ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिसको देख के, जिसको पढ़ के आप समझ सको कि एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट क्या था, what are the different designing parameters, how you develop that particular code, किस कोड का क्या मतलब है. So without having that documentation you cannot maintain the particular software, or we can say we cannot fix the problems.
So that is the major drawback of this particular model, that code soon become unfixable and unenhanceable, right? Because there is no proper documentation, and without any proper documentation we cannot perform the right type of maintenance. So to overcome all these problems, we are having the next model. The next model is known as waterfall model. Waterfall model is a very simple model, and it is having all these steps as you can see in this diagram. So the first step is feasibility study, second requirement analysis and specification, third design, coding and unit testing, integration and system testing, and maintenance. So we will discuss each step one by one. So let's take an example. Suppose आपने अपना कोई एक स्टार्टअप लगाया है, कोई एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है, एंड यू वांट अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? आपने सपोज किसी कंपनी को अप्रोच किया, आपने इन्फोसिस को अप्रोच किया कि वी रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग ऑल दी थिंग्स इन माय कंपनी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, their salary and payload, everything will be maintained with the help of software. So the first step that we need to carry it out is feasibility study, right? So what is feasibility study? There are four types of feasibility study. Feasibility study says that whether the project is feasible to develop or not. जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोजेक्ट हम बनवाना चाहते हैं, जो कंपनी बनाना चाहती है, क्या वो बनाने में feasible भी है कि नहीं है ना? क्या उसका कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा? So there are four types of feasibility studies. फर्स्ट वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि टेक्निकली क्या वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिजिबल है, वेदर वी आर हैविंग दैट टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सेकंड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या बताता है कि क्या उस सॉफ्टवेयर को बनाने से कोई फायदा भी होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली दैट सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड और नॉट. थर्ड इज शेड्यूल फिजिबिलिटी, जितना टाइम क्लाइंट हमें दे रहा है क्या उतने टाइम में वो डेवलप भी हो सकता है कि नहीं. कंपनी को आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक महीने में बन जाना चाहिए, हो सकता है कंपनी एक महीने में ना बना पाए, कंपनी को एटलीस्ट 2 महीने 2.5 महीने चाहिए. इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज नॉट feasible on the basis of schedule. And fourth one is operational feasibility. Operational feasibility says that who is going to use that particular software. आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन सपोज करो अगर उसको कोई यूजर ही नहीं है मार्केट में, उसको कोई यूज ही नहीं करने वाला है, तो फिर उस सॉफ्टवेयर का फायदा क्या होगा? सो वेदर देयर आर सम यूजर्स हु आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, राइट? तो इसको भी आगे हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. एक आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज फीजिबिलिटी स्टडी. तो फर्स्ट कंपनी विल चेक दैट वेदर द सॉफ्टवेयर इज feasible टू डेवलप और नॉट. आपने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया और feasible ही नहीं था, राइट? सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी. If software is feasible, then we will go to the second step, that is requirement analysis and specification. This is a very important phase. In this phase, company will gather the requirements from the client. ठीक है, मैंने अप्रोच किया था इन्फोसिस को कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाइए फॉर मैनेजिंग ऑल दी थिंग्स इन माय कंपनी. So the first thing is Infosys will gather all types of requirement from my company, right? So for that very purpose, he can have the interviews, the brainstorming session, the group discussion. On the basis of that, Infosys will try to capture all type of requirements from the user. ठीक है, यूजर से हर तरीके की रिक्वायरमेंट को लेने की, समझने की कोशिश करेगी. On the basis of all types of requirement, it will prepare a document. That document is known as SRS. ठीक है, एक SRS तैयार होगा. SRS को हम, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फेज? अगर आपने सही से रिक्वायरमेंट ही नहीं समझी यूजर की कि आपको बनवाना क्या है ना, तो क्या होगा? यूजर विल नॉट बी सेटिस्फाइड. और आज की तारीख में पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन. इफ योर कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई, इट विल नॉट रिटर्न बैक. वापस आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने नहीं आएगा. So it is very important that we must understand that what are the requirements of the client, right? तो पूरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को हमें समझना, और समझने के बाद में वी विल राइट ऑल दोज रिक्वायरमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट को हमने क्या नाम दिया है? एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, राइट? एसआरएस बन गया हमारा. आफ्टर
डेवलपमेंट ऑफ SRS वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज दैट इज डिजाइनिंग। जैसे आप लोग अगर एक छोटा सा घर भी बनवाते हो तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है ना, कहाँ पे वॉल होगी, कहाँ पे डोर होगा, कहाँ पे विंडो होगी, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। इसी तरीके से इन द सॉफ्टवेयर इफ वी वांट टू स्टार्ट डेवलपमेंट द फर्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग। अब आप आगे डिटेल में बहुत सारे डिजाइनिंग के टूल्स पढ़ोगे। फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी क्रिएट यूज केस डायग्राम, we create DFDs, we create class diagrams, we create ER diagrams, right? We create different types of other diagrams for the designing purpose, ठीक है। तो डिजाइन बनने के बाद ही फिर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने रिक्वायरमेंट ली और उससे कोड स्टार्ट कर दिया। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो ये पॉसिबल है कि आपने सीधे रिक्वायरमेंट्स लिए और कोड स्टार्ट कर दिया, बट फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग। तो हर कंपनी, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी कोई ना कोई डिजाइन टूल यूज करके डिजाइनिंग करती है और तभी वो अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेगी। डिजाइनिंग हो गया तो डिजाइन बनने के बाद भी एक डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज नोन एज SDD, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। SDD, SDD, ठीक है, ये डी है तो SDD, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें क्या है दैट डॉक्यूमेंट विल कंटेन द कंप्लीट डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। दैट SDD will be input to the next phase that is coding and unit testing, ठीक है। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। अब क्या होगा, वो जो डिजाइन डॉक्यूमेंट था दैट डिजाइन डॉक्यूमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट टीम मेंबर्स। जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन टीम के मेंबर्स होंगे, जो कोडिंग टीम के मेंबर्स होंगे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डिजाइनिंग में एक चीज जो हम और ध्यान देते हैं वो क्या है, वी यूज मॉडुलर अप्रोच। मॉडुलर अप्रोच क्या कहती है, यू डिवाइड द एंटायर सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दो, राइट। यू डिवाइड द एंटायर सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो फायदा क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडुलर अप्रोच वी कैन यूज द पैरेलल डेवलपमेंट। अब ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, आप हर टीम को इंडिविजुअल मॉड्यूल असाइन कर दो, हर टीम मॉड्यूल्स को डेवलप करेगी, डेवलप करने के बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज मॉडुलर अप्रोच। तो डिजाइन आगे और डिटेल में जो हम पढ़ेंगे तो इसमें मॉड्यूल, कपलिंग, कोजिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कि हाउ वी कैन डिवाइड द डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट। अब कोडिंग टीम के पास आ गया, कोडिंग टीम ने अलग अलग मॉड्यूल्स लिए एंड दे स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। After development, after coding, then the next phase is unit testing. So unit testing क्या कहता है, testing of an individual module। अब जिस डेवलपर ने उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बनाया है, जिस डेवलपमेंट टीम ने, वही टीम उसको टेस्ट भी करेगी, ठीक है। सपोज मेरी 5 बंदों की टीम है, तो मैंने अगर इस मॉड्यूल एक्स को बनाया है तो मैं ही इसको टेस्ट करके देखूंगा कि जिस पर्पज से मैंने बनाया था वेदर दिस मॉड्यूल इज सर्विंग दैट पर्पज और नॉट, ठीक है। कि इसमें एक्स और जेड मैंने इनपुट दिया था और मेरा आउटपुट कुछ आना चाहिए था, वो आया या नहीं आया। सो दैट विल बी टेकिंग केयर बाय individual teams and that is known as unit testing. So testing of an individual module is known as unit testing. तो इस तरीके से मैंने हर मॉड्यूल की टेस्टिंग कर ली। उसके बाद में फिर देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अब क्या होगा, इंडिविजुअल मॉड्यूल तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जब हम सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करेंगे तब वो कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो व्हेन वी आर कंबाइनिंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स देन हाउ दे आर वर्किंग, दैट विल बी टेकन केयर इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो मॉड्यूल 1 इंडिविजुअली ठीक काम कर रहा था, मॉड्यूल 2 इंडिविजुअली ठीक काम कर रहा है, बट व्हेन वी कंबाइन मॉड्यूल 1 एंड 2 नाउ वी विल चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू मॉड्यूल्स, ठीक है। 2 ठीक काम कर रहे हैं, तीसरा उसमें कंबाइन कर दिया, चौथा कंबाइन कर दिया। इन दिस वे वी विल इंटीग्रेट द डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड वी विल परफॉर्म द टेस्टिंग दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते जाओ, उनकी टेस्टिंग करते जाओ। एंड फाइनल वी आर हैविंग द सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। जैसे आप एक कार लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, सिस्टम टेस्टिंग। आपने चला के देखा उसका क्लच काम कर रहा है, गियर ठीक काम कर रहा है, पिकअप अच्छा है, चलाने में अच्छी है, दैट इज नोन एज सिस्टम टेस्टिंग। पूरे ओवरऑल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द लास्ट फेज दैट इज नोन एज
मेंटेनेंस, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, उसकी हमने टेस्टिंग कर ली। आफ्टर टेस्टिंग इन्फोसिस ने क्या किया, आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, उसके साथ में कुछ ऑपरेशनल मैनुअल भी आएगा कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर पे काम करना है। इन्फोसिस मे ऑल्सो प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग दैट हाउ यू कैन ऑपरेट ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट। हो सकता है सॉफ्टवेयर बनने में 4 महीने 5 महीने लगे हों, अब उसके बाद में उसका अगले 5 साल 10 साल क्या चलने वाला है, मेंटेनेंस। इसीलिए आज की तारीख में इंडिया में बहुत सारी जॉब्स हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बन गए हैं, अब उसकी क्या चल रहा है, मेंटेनेंस। जैसे इन्फोसिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था फिनेकल, बैंकिंग के लिए, और वो बनाने के बाद में आज आपको पता है कि कितनी मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन चुकी है इन्फोसिस। तो अब वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका है और वो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे बैंक्स में यूज हो रहा है। थिंग इज दैट हाउ नाउ ऑल दी सॉफ्टवेयर्स विल बी ऑपरेशनल, है ना, उसको मेंटेनेंस अब कैसे देनी है। So that maintenance work now started and that will be carried out for the different time period slots. So these are the different phases of waterfall model, right? अब आप लोग ये सोच रहे होगे इतना अच्छा मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, तो क्या आज भी यही यूज हो रहा होगा? नहीं, दिस मॉडल हैज ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। अब ये मॉडल हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा मॉडल है और इसमें हर तरीके की इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और उसके बावजूद ये मॉडल इतना अच्छा होने के बाद भी मार्केट में यूज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सोचना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।